समझ में आ गया ना कैलकुलेशन। तो अब देखो ये परी आपका जो था गलत था भाई, एल इंटू ब्रेथ ये नहीं होगा, फॉर्मूला मेन क्या होगा, ये वाला होगा 2 इंटू एल प्लस, ठीक है, याद रखना सक्षम। अब देखो इसमें आगे, For handkerchief, we can measure the sides all together. But in a field, it is a bit difficult. So the better method is to measure each side and finally add them all. Similarly, by adding sides, we can find the perimeter of any closed figure. कह रहा है कि हैंकरचीफ का क्या शेप था, वो अभी जस्ट बताया था, ये शेप क्या था हैंकरचीफ का, मैम स्क्वायर था। कह रहा है इसको इजीली भाई एक साइड पता तो सबको पता होगा कि सेम तो सबकी साइड वही होगी, लेकिन ये जो है इसमें एक साइड दो सेम है और दो क्या है मतलब इक्वल है, दो अनइक्वल है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इसको कैसे इसका पेरीमीटर निकालोगे, कैसे पता करोगे, क्योंकि इसमें तो एक ही मेजरमेंट चारों में है, इसका 2 into लेंथ 2 मल्टीप्लाई हाँ। लेंथ प्लस, तो उसलिए कह रहा है कि सबका क्या करोगे आप ऐड करके, जो भी दिया रहेगा मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे ऐड करते जाओगे, या तो फिर फॉर्मूला के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके, जैसा आपका क्वेश्चन पूछेगा जिस शेप में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। बात समझ में आई ना। चलो अब देखो ध्यान से, पर ये कंफ्यूजन दूर करो भाई, ऐसे कंफ्यूज मत हो, अब ध्यान से देखो। So the better method is to measure each side and finally add them all. Similarly, by adding sides, we can find the perimeter of any closed figure. ये देखो 1 2 3 4 5 क्या दिया, साइड्स दिया था ना, तो सभी साइड को एक साथ ऐड कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको आपके पेरीमीटर्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। Now we will find the perimeter of a rectangle. Let us consider a rectangle ABCD whose length and breadth are 15 centimeters and 9 centimeters respectively. चलो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। मैम मेरी कॉपी आपने कहीं रख दी है। मैम 48 सॉल्व कर बताओ। मैम कर दी। चलो भाई इनका 48 है, आप लोगों को क्या है जल्दी दिखाओ। मैम मेरा 20 इसमें मेरा भी 48 आ रहा है। ओके नेक्स्ट, अभी 2 का आंसर आया, अभी 2 बाकी है, चलो जल्दी बताओ। मैम पेन तो मुझे क्यों आपकी पेन क्या हुई, पता नहीं कहाँ पे। डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस, ओके यू हैव टू सॉल्व दिस। 16 17 18 19 20 21 डायरेक्ट प्लस कर दे। You can solve by both method, मैं by 48 addition and मैं by 48 multiplication। 48 यस मैम। मैम मैंने एक्सरसाइज लर्न कर लिया, अब क्या करूँ। चलो बताओ तो कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, आंसर दो, गिव मी द मैम 2 आंसर। मल्टीप्लाई लेंथ मैम 48 आंसर। ओके लेट मी सॉल्व। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। ऐसे कर सकते हो, या तो इसको कैसे लिखोगे, AB 2 मल्टीप्लाई AB प्लस क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD प्लस CD प्लस AD, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो साइड्स को, ये सभी क्या है साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स है, ठीक है। तीन के साइड्स को आप कैसे लिखते हैं, मान ली या तो सिंगल सिंगल लिख सकते हो ABC करके, या तो आप क्या करोगे ऐसे इनके साथ आप लिख सकते हो पेयर बना के। AB की क्या वैल्यू है 15, कितना है 15 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 9 सेंटीमीटर, देन आप फिर आपका DC
फिर 15 सेंटीमीटर प्लस AD 4 सेंटीमीटर. So what is the sum? Sum will be वो 9 सेंटीमीटर है. 9. okay. It's my mistake. Sorry. तो sum 48. Are you sure? Yes ma'am. ठीक है. एक तो मेथड ये है, वन मेथड एडिशन. अब मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूले के साथ कैसे दो, ये तो आपका है, रैंडम आप कर दोगे, ऐड कर दोगे पूरे साइड्स को. अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूले के साथ कैसे करोगे? 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 आप लिख दो मल्टीप्लाई बाय L is the 15 plus and breadth is the 90. 9. Okay. तो अब इसको ऐड करो, कितना होगा टोटल? ये 15 and 9 कितना होगा? मैम 24. मैम 2 मल्टीप्लाई बाय 24 ऐसे हो लिख गया. सकते अब इसके बाद इससे क्या करो? 2 मल्टीप्लाई That 2 multiply 24. 2 4 जा 88. 2 जा 4. 48 आ रहा है. 48 सेंटीमीटर. ओके. ऐसे तो 24 तो चीजें क्लियर है आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? Yes, अब देखो ma'am. कॉन्सेप्ट. अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लोगे? यस मैम. एनी डाउट? नो मैम. ओके. परी यस मैम. सक्षम नहीं है. Perimeter of a rectangle is equal to sum of all its four sides. आपको सॉल्व करने से पहले बिफोर द सॉल्यूशन वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट. ओके. सो इट्स कंपल्सरी. देन आफ्टर दैट यू विल बी सॉल्व. That is, AB plus BC plus CD plus DA is equal to AB plus BC plus AB plus BC. As AB is equal to CD and BC is equal to DA, the opposite sides of a rectangle are equal, which is equal to 2 into AB plus 2 into BC. This becomes 2 into AB plus BC whole. Putting in the values, we get 2 into 15 centimeter plus 9 centimeter whole is equal to 2 into 24 centimeters is equal to 48 centimeters. Perimeter of a rectangle is equal to length plus breadth plus length plus breadth. That is, perimeter of a rectangle is क्या equal बात हो to रही है? 2 into length plus breadth. मैम क्या था कल क्या हुआ था Let us see this by an example. चलो इसका भी सॉल्व करो. Shabana wants निखिल फास्ट कर. चलो सॉल्व करो. अभी कुछ मैं वर्कशीट दे रही हूँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. चलो ये देखिए ले स्पेशली क्योंकि आपका अभी चल रहा है, तो अभी आप उसको करो, सॉल्व करो, जल्दी करो. मैम 10 क्या लिखा है? मैम 10 मीटर. Savannah want to put a lace border all around the rectangular table. इसका एक लेस लगाना 10 मीटर. 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड. तो फाइंड द लेंथ. 10 मीटर. क्या जल्दी कर भाई, इतना तो 10 आ गया. आप लोग बताओ, जल्दी बोलो, फास्ट. यू हैव ओनली 2 मिनट्स. मैम लेंथ फाइंड कर दिया ना. पेरीमीटर. मैम मैंने ऐसे कर लिया मल्टीप्लाई करके. मैम पर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लेंथ. 10 आ रहा है. लेंथ इट मींस की टोटल लेंथ, इट मींस पेरीमीटर. मैम 10 आ रहा है. मींस की क्वेश्चन क्या है कि उस टेबल की जो ब्रेथ है वो क्या है, 2 है सेंटीमीटर, 2 मीटर है एंड लेंथ क्या है, 3 है. मेजरमेंट किसका, टेबल का है. तो उसमें कपड़े कितने लगेंगे टोटल लेंथ, उसका पूछा है. अब बोलो 10 मीटर. मैम 10 मीटर. मैम कैन. श्योर? Yes, ma'am. ओके, लेट मी चेक. to put a lace border
all around a rectangular table cover 3 meters long and 2 meters wide. Find the length of the lace required by Shabana. Length of the rectangular table cover is equal to 3 meters. Breadth of the rectangular table cover is equal to 2 meters. Shabana wants to put a lace border all around the table cover. Therefore, the length of the lace required will be equal to the perimeter of the rectangular table cover. Now, perimeter of the rectangular table cover is equal to 2 into length plus breadth is equal to 2 into 3 meters plus 2 meters is equal to 2 into 5 meters is equal to 10 meters. ठीक है, वेरी गुड. So, length आप of the सभी का lace देना है ना? required is और 10 सबसे अच्छी meters. बात है कि क्विक रिस्पांस सबसे अच्छा सक्षम का है. ऐसे आप लोग माइंड में कैलकुलेशन रखो. देखो तुरंत क्वेश्चन के क्या नंबर दिए हैं, क्या पूछ रहा है, What तो about the बॉडी सॉल्व perimeter करो. of regular shapes? देखो अब आ जाओ. Let us see. अब इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हमारा शेप होगा. नेक्स्ट शेप्स मैम 4 मीटर स्क्वायर. पहले समझो, ठीक है. स्क्वायर पहले आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट जो शेप्स का पेरीमीटर क्या था? कौन सा शेप था? रेक्टेंगुलर शेप. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर ये क्या है? स्क्वायर शेप है. तो इसका हम देखेंगे. तो अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूले होंगे, कैसे हम इसको ऐड करेंगे. ठीक है. First, we will consider square. Consider this example. Viswamitra wants to put colored tape all around a square picture of side 1 meter as shown. What will be the length of the colored tape he requires? Since Viswamitra wants to put the colored tape all around the square picture, he needs to find the perimeter of the picture frame. Thus, the length of the tape required is equal to perimeter of square is equal to 1 meter plus 1 meter plus 1 meter plus 1 meter is equal to 4 meters. Now, we know that all the अगर four formula sides of अच्छा, square चलो. are equal. साइड मल्टीप्लाई Let me बाय the 4. formula. मैम साइड मल्टीप्लाई बाय 4. मैम अगर चारों साइड से में तो हम 4 into साइड्स कर देंगे. हम अलग अलग है तो हम प्लस कर देंगे ना. जब आप ऐसे केवल एडिशन वाला रूल करोगे, आप केवल एडिशन करना हो तो साइड 1 प्लस 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 कर दोगे. लेकिन जब मल्टीप्लाई, अब जब फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या करोगे? साइड्स कितनी है? Four. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4 sides. So what will be the formula of square? Perimeter of 4 square? into sides. 4 into sides. 4 into side. ठीक है. साइड्स या साइड? साइड वन साइड लेंगे. ठीक है, साइड्स कर देंगे, इसका मतलब मोर देन वन साइड. तो अब इसमें बताओ साइड क्या है? व्हाट इज द साइड? मेजरमेंट 1 मीटर, सो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 मीटर. योर आंसर इज द 4 मीटर बाय द फॉर्मूला. ठीक है. In place of adding it 4 times, we can multiply the length of one side by 4. Thus, the length of the tape required is equal to 4 into 1 meter. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्टेटमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, स्टेटमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. सो ये चीज आपको भूलना नहीं है. ठीक है, लेंथ पहले क्या बोल रहा है वो चीजें लिखो. स्टेटमेंट क्या गिवन है, क्या निकालना है, क्या चीज लिखनी है, वो चीजें लिखना जरूरी है. आया? क्लियर है परी? Yes, ma'am. Is equal to 4 meters. We see that perimeter of a square is equal to 4 into length of a side. Now, look at equilateral triangle with each side equal to 4 centimeter. नेक्स्ट फिगर इज क्या होगा आपका? Ma'am, 3 into 4. What is the name of that figure? Ma'am, triangular. Okay, so I am asking about the figure, na?
first you listen carefully, then after that you have to give the answer. 12. Can we find its perimeter? 12 centimeter. Perimeter of this equilateral triangle is equal to 4 plus 4 plus 4 centimeters is equal to 3 into 4 centimeters is equal to 12 centimeters. So all sides is equal. Yes, So ma'am. what is the We name of find that the triangle? perimeter of an equilateral triangle. What is the name of that triangle? Triangular figure. Ma'am, No, what is the name? How many types of triangle are there? Ma'am, 2 types. 2 types of triangle. Tell me the name. Ma'am, triangle. It's a right triangle. Name, just I am asking you about the name. Ma'am, How many types of triangle? मैम मैं जीरो के क्वेश्चन आंसर मैम मैं कल ना कॉपी मैम के पास है चेकिंग के लिए तो बुक से क्वेश्चन है हाँ बुक से ma'am, 3. 3. Tell me the name. What is the name of triangle? How many types of triangle are there? Ma'am, 3 Types of What is the classification of triangle? classification of triangle is equilateral. 3 sides. Stand up, everybody. Where is my stick? First, tell me the name. Triangle. You don't know? Nobody know about the triangle? Equilateral और scalene Hmm. और एक equilateral scalene And isosceles? I think. isosceles. So I think you should know about that the triangles. The triangle is classification on the basis of 2 types, na? 2 bases. On the basis of sides, on the basis of Sides. angles. On the basis of sides and on the basis of angles. There are 2 classification of triangles. So on the basis of sides, what is the name of? Just you told. Equilateral scalene or Isosceles. 3 types. Okay. Yes, ma'am. So what is the mean of equilateral triangles? Equilateral. All sides are equal. So this triangle's name is the equilateral triangles. Okay. Yes, ma'am. That's why I'm asking you about that. And on the basis of angles, how many types of triangle? Acute, Acute, triangle, obtuse, acute, obtuse, and right triangle. Ma'am, straight. Three main types on the basis of angles. Okay. So you should know. It's must. Straight angle भी तो होता है. Straight triangle. Straight angle and complete angles. There are many types of angle, but there are three main types. Okay. Acute, obtuse, On or Acute, right. obtuse or right. Right angle, complete, straight, and And 0 degree. reflective. Reflexive. ना? तो अब बताओ क्या करना चाहिए आप लोग के साथ? भूल गए हो? अभी अयान आपने तो लास्ट में इसे रिवाइज भी किया था राइट? ट्रायंगल्स का टाइप हुआ है. Sorry? You don't know about the triangle? Triangles are basis on two types. Tell me about the right angle. Right angle. Ma'am, 90 angle degrees. is 90 degrees. Exact 90 degree. 90 degrees. Okay. Exact. And obtuse? Obtuse. Less than less than 180, more than 90 degree. And what is the acute angle? Less than 90 degree, more than 0 degree. Okay. So your memory is working now, huh? Yes. Okay, sit down everybody. Thank you.
triangle is equal to 3 into length of a side. What is similar between a square and an equilateral triangle? Tell me the differences. Ma'am, Square has four four sides. Four sides and Four triangle has angles. three sides. Four angles. Okay. Square Four have angles, four four sides sides, four and a corners, triangle four has three edges. sides. Okay. Four three sides. edges, four corners, four angles, Ma'am, four sides. मैम अगर इसके बारे में बोले कि दोनों सेम कैसे होते हैं? Only you have to compare there because they are on the basis of sides. Sides are equal of the square and sides are equal of a triangles. Okay. So there are the difference, main difference. Okay. डिफरेंस ना उसको क्या कहोगे आप? सिमिलरिटी. सिमिलरिटी क्या है कि इनके साइड जो है इक्वल इक्वल है. डिफरेंसेस क्या है? इनके 4 है और इनके 3 साइड्स है. They are figures having all the sides of equal length and all the angles of equal measure. Such figures are known as regular closed figures. Thus, a square and an equilateral triangle are regular closed figures. We found that perimeter of a square is equal to 4 into length of one side. Length of one side. Perimeter of an equilateral triangle is equal to 3 into length of one side. So what will be the perimeter of a regular pentagon? Can you tell us? Anybody can tell One me? side plus 5. 5 into Side. 5 into length of one side. Okay. plus. And what about the hexagon? Ma'am, side multiply by 6. Okay. What about the octagon? Ma'am, side multiply by 8. Okay. Chalo, good. So today we will stop this topic, and after that we will start another topic. Okay. So Nikhil, you have to revise well, and you have to look in your book and revise.